आमंत्रित व्यक्ति पधार चुके हैं। नीली पट्टिका के अनावरण की पूरी तैयारी प्रतीक्षा है तो केवल दो विशिष्ट व्यक्तियों की। आज के मुख्य अतिथि श्री सुनील गावस्कर और अध्यक्ष के रूप में आमंत्रित लॉर्ड पेनर ब्रॉकवे। वे लोग किसी भी क्षण यहां उपस्थित हो सकते हैं। अन्य लोग उन्हीं की प्रतीक्षा में कैमरामैन फोटो लेते हुए, सामने दाईं ओर सफेद सूट में श्री मदन मोहन कालिया, जो सावरकर समिति के अध्यक्ष, कारों का हुजूम, सामने से आते हुए श्री मुकुंद सोनपटकी, जो बहुत बेसब्री से विशिष्ट अतिथियों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस संपूर्ण समारोह में मुकुंद जी का विशेष योगदान है। ये सामने से एक कार आई, इसमें से उतरते हुए कुछ स्कूली बच्चे जो एक प्रार्थना गीत से आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। ये दूसरी कार, जिसमें से निकलने वाले व्यक्ति के परिचय की आवश्यकता नहीं। श्री सुनील गावस्कर आज के प्रमुख अतिथि। उनका स्वागत करते हुए श्री कालिया। सुनील जी ने अपने 1 ही मिनट के भाषण में बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा, मैं इतिहास का विद्यार्थी नहीं, मैंने जिस इतिहास का अध्ययन किया है वो है क्रिकेट का इतिहास, और संभवतः क्रिकेट का थोड़ा सा इतिहास रचा भी है, पर वो इतिहास इतना रोमांचक नहीं जितना वो इतिहास जो वीर सावरकर जैसे क्रांतिकारियों ने रचा। सामने नरेश की उंगली उठाकर भवन के विषय में बताते हुए श्री नरेश अरोड़ा बीबीसी से हिंदी समाचार कहते हैं। श्री कालिया बीच में, बाईं ओर श्री सुनील गावस्कर, उनके दाईं ओर श्री मुकुंद सोनपटकी चित्र खिंचवाते हुए। ये लंदन की जानी पहचानी काली टैक्सी, जिसमें उतरते हुए यूनानी दूतावास के एक प्रमुख अधिकारी, जिन्होंने अपने भाषण में सावरकर को स्वाधीनता, स्वतंत्रता और समानता का अग्रदूत कहा। दाईं ओर नरेश जी,
मुकुंद सोनपत की मंच की व्यवस्था को देखते हुए तैल चित्र में सावरकर जी नीचे तल्ले पर रहने वाले किराएदार आज भी कहते हैं कि कभी रात के सन्नाटे में यहाँ अजीब सी रहस्यमयी खुसफुसाती हुई आवाज़ें सुनाई देती हैं। और देखिए, प्रतीक्षा की घड़ी पूरी हुई, सामने से आ रहे हैं लॉर्ड सेनर ब्रॉकवे। 97 वर्ष की आयु में भी कार से मंच तक पैदल आना और फिर लगभग 6-7 सीढ़ियां चढ़कर मंच पर जाना, और इसके बाद श्री ब्रॉकवे ने जो भाषण दिया वो ऐतिहासिक था, जिन्होंने स्पष्ट ये कहा कि जिस समय सावरकर ने स्वतंत्रता का उद्घोष उठाया था, उस समय तक राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी ये बात इतने स्पष्ट रूप में नहीं कही थी। हाथ में कागज लिए आज के कार्यक्रम बताते हुए लंदन के उप महापौर नॉर्मन हॉवर्ड कुछ विशिष्ट व्यक्तियों का एक दूसरे से परिचय। और इसी के साथ आरंभ होती है आज का कार्यक्रम। पहले इन बच्चों द्वारा एक प्रार्थना गीत। Our very good friend, Lord Senator Brockway. Yeah. Before we go any further, I think we want to hear the children sing. Well, this is a very, very important occasion, not only for the Indian community, but also for the English community. Savarkar perhaps wasn't everybody's cup of tea. Great radicals probably never are everybody's cup of tea. But certainly he was a great patriot, a great fighter for freedom. And for that reason, if for no other reason, we are glad to have this sort of presentation in his honour. Now, I'm going to ask Councillor Penzay to say a few words.
Lord Brockway, Mr. Kay, the Deputy Mayor, Madam Deputy Mayor, and friends. This is indeed a very historic occasion, a very important occasion, as Mr. Kay just said, not only for the local community, not only for the Indian community, but also for London. Because this is a house in which a very great revolutionary lived over 80 years ago. And we are honoring him, honoring his memory by unveiling the plaque here this morning at the hand of Lord Brockway. The Greater London Council has indeed done us a great favour and a great honour by erecting the plaque on this house, and we all ought to appreciate the assistance given by them, particularly by Mr. Kay and his colleague, Councillor Norman Howard. I am sure the Deputy Mayor of Harry, who is here, will also be pleased to know that this house will be well known to the Indian community because of this ceremony today. And we all appreciate his hospitality to us this morning. There will be a couple of more speeches, so I won't take any more of your time. Most of us were present yesterday at the meeting in County Hall. So we heard a lot about Savarkar, and we saw the video which showed his life and the sufferings he went through. But if this ceremony of today gives us a reminder of what Savarkar achieved and what his greatness was, it will have served a great purpose. Thank you for coming on this lovely Saturday morning, and you're welcome to this house. Thank you very much. Next speaker. No, you're not Sure, you're the speaker. No, you're not speaking yet, Pranav. Okay, next one. Now, our next speaker is Mr. Kaliskar. Yes, thank you very much. Ladies and gentlemen, firstly let me say that I am really not a student of history. If at all, I am a student of history, of cricket history. And therefore, I think my knowledge is rather limited. However, I would only like to say that the post-independence generation that we are, we seem to take independence for granted and often forget the struggle that freedom fighters like Veer Savarkar put up to get independence for our country. If we keep remembering that, and this should serve as a reminder, I'm sure India has a bright future. Thank you all for inviting me over here. Thank you very much. Now, we have that at least the people, the authorities, they think to put things right and to honor today those people that maybe 50 or 60 or 100 years they call them terrorists. The people that they lead in the struggle against colonialism. The people that they sacrifice themselves to see a better day and independence and freedom. Today is a great honor to unveil that flag that will remain forever in the minds of all those people that they love freedom, they love democracy, they love liberty. Thank you. Now, our next speaker, of course, is one of the most beloved characters in the Labour and Radical movement, Senator Brockway. Friends, I feel very honoured in being asked to unveil this flag. Vinayak Damodar Savarkar, nearly 100 years ago, stood for the independence of India. He was a pioneer in that demand
in modern times. With Tilak, I was chairman of the committee which welcomed Tilak to England. I'm not sure that I ever met Savarkar. But this should be remembered. He stood for the independence of India even before the Indian National Congress did so.